हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब सही होंगे। आज एक नया दिन है और एक नई शुरुआत है। आज हम एक और रोड ट्रिप ले रहे हैं एंड दिस रोड ट्रिप इज़ टू कैम्ब्रिज टाउन। कैम्ब्रिज टाउन फेमस है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लिए एंड दिस टाउन इज़ लोकेटेड नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ लंदन। तो आज हम लंदन से कैम्ब्रिज जा रहे हैं। लंदन से कैम्ब्रिज के लिए द बेस्ट वे इज़ टू टेक M11 मोटरवे और एक्सप्रेसवे। ये डायरेक्टली कनेक्ट कर देता है लंदन को कैम्ब्रिज टाउन के साथ। जैसे मैंने बताया, कैम्ब्रिज टाउन फेमस है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लिए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी डेट्स बैक टू द 13th century। आई थिंक 1210 के अराउंड इसकी फाउंडेशन हुई एंड इट्स लाइक वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन कंटिन्यूस ऑपरेशन इन द वर्ल्ड। कैम्ब्रिज के बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, हम इंडियंस रिलेट करेंगे। देयर आर वेरी नोटेबल इंडियन who are alumni of Cambridge. Cambridge University is famous for, Cambridge University is actually a combination of lot of colleges. There are almost 30 plus colleges, including the one world famous Trinity College. और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है वो, जैसे मैंने बताया, वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ है। अराउंड 100 प्लस नोबल लॉरिएट्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आ चुके हैं। इट्स फेमस फॉर इट्स कोर्सेज इन लॉट ऑफ एरियाज इंक्लूडिंग आर्ट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, but I think it's it's one of the most famous universities in today's time when it comes to science and technology. इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ हम लोग इंडियंस जो है वो रिलेट करते हैं। काफ़ी सारे फेमस इंडियन एलुमनाइज हैं जो कि कैम्ब्रिज के हैं, जो कि हमारे पब्लिक लाइफ में बहुत ही दे हैव मेड अ लॉट ऑफ मार्क इन पब्लिक लाइफ। फॉर एग्जांपल, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर, एटलीस्ट 3 प्राइम मिनिस्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टू राजीव गांधी टू मनमोहन सिंह, ये सारे कैम्ब्रिज के पास आउट्स हैं। और उसके अलावा आई थिंक अमर्त्य सेन और रघुराम राजन, इनका भी नाम सबने ही सुन रखा है। दीज आर फेमस इकोनॉमिस्ट। और साइंटिस्ट हो गए तो रामानुजन, मैथमेटिशियन, ही ऑल्सो इज एन एलुमनाई ऑफ कैम्ब्रिज। एंड वन ऑफ द मोस्ट रीसेंट एंड फेमस एलुमनाइज इज निकू मधुसूदन, जो कि आजकल बहुत न्यूज़ में है। इनफैक्ट कैम्ब्रिज जाने से पहले मैंने उनको कॉन्टैक्ट भी किया था। I wrote an email to him wanting to see him because उनका वर्क अभी recently regarding discoveries of life in exoplanets। exoplanets मतलब वो planets जो कि हमारे solar system के बाहर है, तो काफ़ी famous हो गया है। For example, he has recently, I think 2-3 months back, he led one of the recent discoveries of alien life in a very distant exoplanets around 120 light years away from Earth, called K2-18b। तो मैं उनसे मिलना चाहता था, हालांकि आई अंडरस्टैंड उनका बिजी शेड्यूल है कोई। इट्स व्हाई आई थॉट लाइक लेट्स मेक दिस ट्रिप एंड गो टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज टाउन एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज टाउन बेसिकली कैम्ब्रिज कैम रिवर के अराउंड पूरा इस्टेब्लिश्ड है। कैम रिवर रन्स ऑल अक्रॉस। इट्स नॉट अ डीप रिवर, इट्स अ वेरी शैलो रिवर। आई थिंक 6 to 8 feet डेप्थ है उसकी, एंड इट रन्स ऑल अक्रॉस कैम्ब्रिज टाउन। एंड सारी यूनिवर्सिटीज़, सारे कैंपसेस, सारे सब इसी जो है रिवर के अराउंड ही बेस्ड है। तो अब हम यहाँ से ड्राइव हमने शुरू कर दी है। वी आर ऑन द वे फ्रॉम लंदन, सेंट्रल लंदन टू कैम्ब्रिज टाउन। कैम्ब्रिज टाउन के में हम जाएंगे एंड देन विल जस्ट वॉक अराउंड देयर, और उसके बाद वहाँ पे हम थोड़ा यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे। हाँ, पंटिंग का एक फेमस वहाँ पे एक साइट सीइंग अट्रैक्शन है, वो कैम रिवर जो मैंने बताया, उस पे बोटिंग या पंटिंग बोलते हैं उसको। पंटिंग यहाँ पे बोलते हैं, मतलब बोटिंग समझ लीजिए, बोटिंग होती है। बोटिंग कुछ प्लान है, और वहाँ कुछ साइट सीइंग करेंगे, बोटिंग करेंगे। वहाँ के मैं कुछ वीडियोज़ दिखा दूँगा। अभी आप ड्राइव एंजॉय कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।
This is the main street in Cambridge और हम यहीं पे वॉक कर रहे हैं काफ़ी देर से. What's this? Inaugurated by Stephen Hawking. ये and managed in 2008 by Stephen Hawking. ये डाल दो. ले लेते हैं. कुछ तो सोचो होगा. So you should go this way, right? This way. You're going for punting. मतलब ये Punting walking first. towards punting. Okay. Sorry. Okay, so hang on. Okay, so now you can explain. So what was that clock? So it does not have any hands or numbers, and there's just a blue LED light that reflects the time. And the large grasshopper on top of it, it walks the seconds forward. And the whole idea of grasshopper, or the metaphorical sort of symbolism there is, that grasshopper represents how time devours life, essentially. So almost like how we don't take time, we don't value time enough, basically. So that's the symbolism there. And apparently the clock intentionally speeds up, slows down and pauses, which is again a metaphor for irregular nature of life and how we experience time. So that's the deep meaning. Time is slipping away. I think you're a good team. Absolutely. Baby, come on the side. ये देख रखा है ना. UV? College. No Indian parent pressure on you at all. Nothing. You want to look here? This is so we can take the video of this quickly. चलो. हाँ. Keep on going. So we're open until 7 o'clock. What time? 7. What time would you like to go? Probably after walking a little bit, what do you guys? Yeah. So Yeah, you you- can walk around some more Yeah. time because You can pre-book if you wanted to, so the boat will be waiting for you when you return. If you could commit to a time, so you can book you for whenever you like. So if you wanted to book, our wait time for tour at the moment is about 30 minutes. Right. And what are the prices? So if you come over here, I'll show you. We've got a couple of different options. So we do private tours and we can do shared tours as well. The cheapest option for you four would be to get a bench on a shared tour. So we sell by space on the boat. The bench is for 3 adults, but because the 4 of you will fit, it'll be the same price for the 4 of you. So £93 in total if you go like this. With families, you have 10% off these prices. So if you wanted half the boat, it would be 126 in total. If you wanted the private tour, it would be 225. That's the whole boat to yourselves. Yeah. So these are our boats here. So one bench like that would probably be enough for the 4 of you. But if you wanted more space, that's always an option. yes, we are. You are? Well, whatever they've just told you over there is basically the same thing that I said. Okay. What's going on over here. So Other is than it that, like it's about half the price. So you basically are just saving money to do the same thing. Is it? Okay, so what is your price? What for would be four a of price us? for us? Yeah. Well, children obviously are much cheaper. So children, P6. Yeah, P6. yes, so children are £12. That's for anyone under 12 years old.
Adults are £22 each. For all of you to go, it's 78. Any discounts you give? We don't do discounts to anyone other than children and students, or concessions. So if any of you over 65, well, okay. So basically that's the thing. We do on the board prices. You can agree it's a fairer way to do things than having an enormous number on the board and tricking you with a discount that still makes it higher, a long way higher. So, it's a different system. Maybe it doesn't make you feel as good, but you'll feel better when you get off the boat and you've paid less money for something that was much better in quality. What's the duration of the tour? And So it's a 50-minute tour. 50-minute tour. And where is your next? So we don't currently have a boat set, so it'll be half an hour's time from 4:30. At 4:30? Okay. And there'll be more people? Yeah, so I mean, it fits a maximum of 12 people. It may not have 12 people on it. Yeah. Got it. Yeah, so that's the setup. We do have a private tour. See, look, yeah, it is so beautiful. Just see it, कितना सुंदर है. We'll cross all these bridges in front. Back there. So we're going to be on the boat for about 45 minutes. Is anyone in a rush for this to be on time and back exactly? No. No. Cool. That's good. Where we are at the moment is the sort of mill pond area. We're going to be travelling through the college back section of the River Cam, which is a 19-mile-long river. 19 miles. Travel through. So, I will lie to you at least 5 times. If you ask me if I'm lying, I'm obviously not going to.